Hello everyone, my name is Shivi and today we are going to start with History Chapter 1 of Class 7. Its name is Tracing Changes Through 1,000 Years. So let's start with the chapter. Take a look at maps 1 and 2. Map 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi. The section reproduced here is the detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in the 1720s by a French cartographer. The two maps are quite different even though they're of the same area. In Al-Idrisi's map, South India is where we would expect to find North India and Sri Lanka is the island at the top. Place names are marked in Arabic. And there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh spelt in the map as Kannauj. Map 2 was made nearly 600 years after Map 1, during which time information about the subcontinent has changed considerably. This map seems more familiar to us, and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. Okay, so in the first paragraph, we've been told to look at the maps 1 and 2. This is the first map that we are seeing. So it is made by Al-Idrisi, an Arab geographer. Cartographer is a person who makes maps. It is written here. So this is the first map. This given here is the second map of the subcontinent from the early 18th century. Both maps are of the same area. Hence, we can see a lot of difference in them. जैसे कि आप देख रहे हो, दोनों ही मैप में काफ़ी डिफरेंस है जबकि दोनों ही सेम जगह के हैं. बेसिकली इस चैप्टर में ये बताया है कि कैसे एक ही जगह को दो अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है जैसे कि दोनों कार्टोग्राफर्स ने बनाया है. दिस इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर एंड वी कैन सी पहले मैप में अराबिक लिखी हुई है ज़्यादा एंड सेकेंड मैप में इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड मैप जिसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है. So moving forward, equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods. When historians read documents, maps, and texts from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the contexts in which information about the past was produced. New and old terminologies. In the context in which information is produced changes with time. What about language and meanings? Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The vocabulary is not just with regard to grammar and vocabulary. The meanings of words also change over time. New and old terminologies topic के अंदर हमें ये बता रहे हैं कैसे not only the maps have changed but also languages and the meanings have changed. Languages में भी difference आया है, words में and grammar vocabulary में तो आया ही है, but meanings of words have also changed over time. Let's see what they've given. For example, take the term Hindustan for example. Today we understand it as India, the modern nation state. When the term was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana
and the lands between Ganga and Yamuna. He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna, and the culture of the inhabitants of the subcontinent. As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusrau used the word Hind. While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. In this paragraph, it is written, if we take the term Hindustan, for example, आज हम उसे इंडिया के नाम से जानते हैं, the modern nation state. पहले जिसने पर्शियन में लिखा था मिनहाज ई सिराज, he only meant areas of Punjab, Haryana and lands between Ganga and Yamuna. जो भी पार्ट दिल्ली सुल्तान के अंडर था, that was considered the part of India. The Sultanate never included South India when they talked about Hindustan. But in contrast, बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ इंडिया की जोग्राफी, फौना एंड कल्चर के लिए किया था. जैसे हम लेटर इस चैप्टर में देख पाएंगे, दिस इज सिमिलर टू द वे जैसे आमिर खुसराव यूज द वर्ड हिंद. While the idea of geographical and cultural entity, मतलब geographical and cultural entity, India exist किया था, but हिंदुस्तान did not carry, उसका कोई political या national meaning नहीं था जो हम उससे आज associate करते हैं. Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. Take, for example, a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not Indian. आज के टाइम पे foreigner word हम यूज़ करते हैं जो इंडिया से ना हो, जो बाहर से हो. जैसे आपने देखा कोई USA से इंसान है, आप उसे foreigner बोलेंगे. But in the medieval period, a foreigner was someone who was stranger, who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of the society or culture. In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person, and in Persian, Ajnabi. A city dweller, therefore, might have regarded a forest dweller as a foreigner, but the two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious or caste backgrounds. तो पहले जहाँ फॉरेनर का मतलब होता था कि डिफरेंट विलेजेस के इंसान एक दूसरे को फॉरेनर कंसिडर करते थे. आज भी समहाउ सिमिलर ही मीनिंग है क्योंकि हम डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं, हम डिफरेंट कंट्री से किसी को आए हुए फॉरेनर कंसिडर करते हैं. पहले इतना वास्ट एरिया नहीं रहता था. पहले जस्ट अगर आप दूसरे विलेज के हो तो आप फॉरेनर हो. हिंदी में जिसे परदेसी और पर्शियन में जिसे अजनबी कहा जाता है. Historians and their sources. Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of the study and nature of their investigation. Last year, for example, you read about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhana. In this book, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. They still rely on coins,
inscriptions, architecture, and textual records for information. But there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual records increased dramatically during this period. They slowly displaced other types of available information. Through this period, paper gradually became cheaper and more widely available. People used it to write holy texts, chronicles of rulers, letters and teachings of saints, petitions, and judicial records, and for registers of accounts and taxes. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries, and temples. They were placed in libraries and archives. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. So, in this, historians and their sources, in these paragraphs, we've been told about the sources of historians. We can see that continuity can still be seen in the sources that is used by the historians. आज भी हम उन sources का use करते हैं. हम लोग अब आज भी जो historians हैं, they still rely on coins, inscriptions, जो architecture है, जो टेक्स्ट रिकॉर्ड्स हैं इंफॉर्मेशन के लिए. हमें कहाँ से पता चलता है सब के बारे में? जो हिस्टोरियंस होते हैं उन्हें इन्हीं सब से, जो पहले के टाइम में यूज़ होते थे कॉइन्स वगैरह, जो भी सब आर्किटेक्चर है, ये हमें उसी से पता चलता है कि क्या होता था, कब हुआ था. और जो नंबर एंड वेराइटी है टेक्स्ट रिकॉर्ड्स की, ये धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी. दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन. मतलब जो टेक्स्ट रिकॉर्ड्स थे वो इतने बढ़ने लगे कि हमें बाकी सब इंस्क्रिप्शंस वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ने लगी. पेपर ज़्यादा से ज़्यादा चीप होता गया, इसलिए टेक्स्ट रिकॉर्ड्स और ज़्यादा यूज़ होने लगे, वो वाइडली अवेलेबल होने लगे. लोग होली टेक्स्ट लिखते थे, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स लिखते थे, टीचिंग्स जो सेंट्स की टीचिंग्स होती थी, petitions, judicial records, and registers of accounts and taxes. ये जो पहले अकाउंट्स, टैक्सेस, जो भी लेटर्स वगैरह थे, आज हम उनको पढ़ के बता सकते हैं पहले के टाइम में क्या हुआ था, कैसे होता था सब कुछ. मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होती थी, वो जो अमीर लोग होते थे वो लोग कलेक्ट करते थे, टेम्पल्स में रखे होते थे. They were also placed in libraries and archives. So archive, a place where documents and manuscripts are stored. Today, all the national and state governments have archives where they keep all their old official records and transactions. आज भी आर्काइव्स में जो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं, उनके रिकॉर्ड्स होते हैं, वो वहाँ रखते हैं. सो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये हमें बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी, अब आज भी करती है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड टू हिस्टोरियंस, बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज. There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. If you ever copied your friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. As a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's work. Manuscript copying is somewhat similar. As scribes copied manuscripts, they also introduced small changes, a word here, a sentence there. पहले के टाइम पे when there was no printing press, जब आप फोटोकॉपीज़ नहीं बना सकते थे, तो जो स्क्राइब्स होते थे, जो लिखते थे, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे, वो हैंड से ही करते थे, उसको देख के अपने पेपर पे लिखते थे.
अगर आप लोगों ने भी कभी अपने फ्रेंड का होमवर्क कॉपी किया होगा, जो कि हम सब लोगों ने किया है कभी ना कभी, तो पता ही होगा कभी कभी आपके दोस्त की कॉपी में ऐसी चीज़ आ जाती है जो हमें नहीं समझ आती उसकी हैंड राइटिंग में, लेकिन हम लोग उससे पूछ भी नहीं पाते कि नोटबुक तो हम घर लेके जाते हैं, तो फिर हमें गेस करना पड़ता है, खुद ही लिखना पड़ता है वहाँ पे। तो ऐसा जब स्क्राइब्स कॉपी करते थे तब भी होता था। तो इसके रिजल्ट में बहुत छोटे छोटे चेंजेस आते थे, बट वो छोटे चेंजेस पिछले टाइम में, पहले के ज़माने में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस, इंपॉर्टेंट चेंजेस हो जाते थे, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बड़े लगने लगते थे। तो जब स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, वो स्मॉल चेंजेस इंट्रोड्यूस करने लगे, एक शब्द इधर, एक सेंटेंस उधर, and then these small changes, differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text became substantially different from one another. This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. We are totally dependent upon the copies made by later scribes. As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written. ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि फिर ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया आज। जो ऑथर ने लिखा, जो ओरिजिनल ऑथर है जिसने वो इवेंट लिखा हुआ है, वो हम लोगों को अब नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जो हिस्टोरियंस हैं, जो इन सब बारों में रिसर्च करते हैं, उन्हें अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है, अलग अलग वर्जन्स पढ़ने पड़ते हैं एक ही इवेंट के, सेम ही टेक्स्ट के, ये गेस करने के लिए कि ऑथर ने ओरिजिनली क्या लिखा था। On occasion, authors revise their chronicles at different times. The 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s. It remained lost in large library collections. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, क्रॉनिकलर मतलब जो पास्ट इवेंट्स लिखते हैं, उनका एग्ज़ाम्पल दिया है ज़ियाउद्दीन बरानी का, जिन्होंने अपना क्रॉनिकल पहले 1356 में लिखा और उसका ही दूसरा वर्जन उसके 2 साल बाद लिखा। दोनों एक दूसरे से अलग थे, बट हिस्टोरियंस को अब तक पहले वाले वर्जन का पता ही नहीं चला था 1960s तक। उनको सिर्फ दूसरे वाले वर्जन का ही पता था, क्योंकि पहला वाला वर्जन वॉज समवेयर लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरीज। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। The study of the 1,000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. So, इसमें बताया है कि 700 and 1750 के बीच में जो हिस्टोरियंस को डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है अब जब वो रिसर्च करते हैं, वो लार्जली इसलिए है बिकॉज बहुत सारे चेंजेस हुए थे उस टाइम पे, बहुत सारी नई चीज़ें आई थी, बहुत कुछ पुराना गया था। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस। न्यू टेक्नोलॉजीज आने लगी, लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, the spinning wheel in weaving, and firearms in combat. New foods and beverages arrived in the subcontinent: potatoes, corn, chilies, tea, and coffee. न्यू टेक्नोलॉजीज़ तो आने ही लगी, जैसे पर्शियन व्हील इन इरिगेशन में हेल्प करने लगी, और स्पिनिंग व्हील इन वीविंग वगैरह में, और फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, वेपन्स वगैरह, फायर आर्म्स कॉम्बैट में, लड़ाई के टाइम पे। नए खाने पीने के सामान, पटेटोज़, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी, ये सब भी इंट्रोड्यूस होने लगे इसी टाइम पे। सो रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स came along with people who brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social, and cultural changes. You will learn about some of these changes in chapter 5, 6, and 7.
सो जो न्यू चेंजेस आए, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स, ये तो आए ही, पर लोग भी आए इनके साथ नए, जो अपने साथ नए आइडियाज़ लेके आए. अब आइडियाज़ आर अ वेरी मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स चेंजेस. तो इन आइडियाज़ टेक्नोलॉजीज़ की वजह से उस पीरियड में people saw a lot of economic, political, social and cultural changes. हर टाइप के चेंजेस देखे. So this was also a period of great mobility. Groups of people traveled long distances in search of opportunity. The subcontinent held immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune. One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra, the son of the ruler. Between the 8th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. पीरियड वॉज ऑफ ग्रेट मोबिलिटी का मतलब है जब लोग बहुत ट्रैवल करते थे. मोबिलिटी मतलब मूव करते थे. ग्रुप्स ऑफ पीपल जो लॉन्ग डिस्टेंसेस चल कर आए हैं, ट्रैवल कर कर आए हैं इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. नई नई जगह पे काम करना, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़. सो सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा इमेंस है. इमेंस वेल्थ का मतलब है बहुत ज़्यादा पैसे की अपॉर्चुनिटी थी, पॉसिबिलिटीज़ थी लोगों को अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए. तो एक ग्रुप था उनमें से राजपूत्स. राजपूत्स हम आज भी सुनते हैं राजपूत्स. ये राजपूत्स नाम आया राजापुत्र से, जो राजा के पुत्र हैं. तो 8th और 14th सेंचुरी के बीच में ये टर्म जनरली क्षत्रिय कास्ट, जो ग्रुप ऑफ वॉरियर्स होते हैं, वॉरियर्स को ही ये टर्म अप्लाई होने लगी और वो लोग क्लेम करते थे क्षत्रिय कास्ट. So the term included not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. सिर्फ रूलर्स या chieftains नहीं, बट सोल्जर्स, कमांडर्स जो लड़ते थे वॉर्स में, आर्मी में काम किया था उन लोगों ने डिफरेंट किंग्स के अंडर इन द सब कॉन्टिनेंट, वो सब लोग ये टर्म अपने आप के लिए यूज़ करने लगे. A chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. Chivalric code of conduct मतलब एक sense of honor, एक code of conduct कि ऐसा उन्हें माना ही जाता है. extreme valor and great sense of loyalty, loyal माने जाते हैं, बहुत ही वफादार लोग होते हैं जिससे लोग उन्हें अपनी आर्मीज़ में लें. ऐसी क्वालिटी से डिस्क्राइब किया जाता था राजपूत्स को उनके पोएट्स के थ्रू. उन पे जो पोएम्स लिखी जाती थी, कहानियाँ लिखी जाती थी, वो दिखाते थे वो कितने लॉयल हैं. अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थास, a caste of scribes and secretaries, also used the opportunities of the age to become politically important. आज भी हम ये मराठा, सिख्स, जाट्स, अहोम्स, कायस्थास सारे नाम सुनते हैं. तो इन लोगों ने भी उस पीरियड में अपनी जगह बनाई है एक, और हम लोगों को इनके नाम आज भी सुनाई देते हैं. ये लोगों ने भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे से यूज़ करी और ये पॉलिटिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स माने जाने गए. Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. Changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. Others started tilling the land and became peasants. These changes included जो इस पीरियड में चेंजेस हो रहे थे उसमें एक था क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को हटाना जिससे हम एग्रीकल्चर बढ़ा सकें, क्रॉप्स की प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन हम जो खेती में बढ़ती हो वो हम बढ़ा सकें. तो इसलिए फॉरेस्ट क्लियर करे जा रहे थे. चेंजेस इन द हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट. जो फॉरेस्ट में जो घूमते थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनको माइग्रेट करना पड़ा, जाना पड़ा अपना फॉरेस्ट छोड़ के. हैबिटेट रेफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ अ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट्स.
Others started tilling the land and became peasants. कुछ peasants बन गए, land till करके peasants बन गए. So these new peasant groups gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries, and temples. They became part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. ये जो न्यू पेजेंट ग्रुप्स थे वो धीरे धीरे रीजनल मार्केट से, चीफ्टन्स, प्रीस्ट से, टेम्पल से इन्फ्लुएंस होने लगे और वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का पार्ट बनने लगे. और दे वर रिक्वायर्ड, उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे, अपना जो सामान कुछ ऑफर करना पड़ता था, और जो लोकल लॉर्ड्स थे उनको अपनी सर्विसेज एंड गुड्स ऑफर करना होता था. तो इसके रिजल्ट में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमंग पीजेंट्स. इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस होने लगे इन लोगों में ही, अमंग द पेजेंट्स ओनली. इन लोगों में ही डिफरेंसेस आने लगे ड्यू टू they being part of large and complex societies. Some possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season. As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcastes and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. कुछ पे ज़्यादा लैंड थी, कुछ पे ज़्यादा कैटल थे, एनिमल्स ज़्यादा थे, एंड सम कंबाइंड अपना आर्टिसनल वर्क और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी लीन सीजन में. लीन सीजन जिसमें काम नहीं होता ज़्यादा, तो उसमें अपना आर्टिसनल वर्क भी कंबाइन किया. तो जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती गई, ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होने लगे, पीपल ग्रुप्ड देमसेल्व्स, लोगों ने अपने आप को जटीज या फिर सबकास्ट में ग्रुप करना शुरू कर दिया, और उनकी रैंक थी उनके बैकग्राउंड्स और ऑक्यूपेशंस के बेसिस पे. बट द रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जटी. द स्टेटस ऑफ सेम जटी कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया. जो रैंक्स थी वो फिक्स नहीं थी, और पावर और इन्फ्लुएंस, जितने रिसोर्सेज थे, आप पे जितनी पावर थी, इन्फ्लुएंस कितना था, उसके हिसाब से कंट्रोल होने लगी रैंक्स. अब सेम रैंक अगर आप एरिया ए में हो, आपकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एरिया बी में वो रैंक कम मानी जा सकती है. सो जटीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स. These regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as the Jati Panchayat. But Jati were also required to follow the rules of the villages. Several villages were governed by a chieftain. Together, they were only one small unit of a state. जो जटी थे उनके मेंबर्स के लिए उनके ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे. ये जो रेगुलेशंस थी वो उन पे फोर्स की जाती थी बाय असेंबली ऑफ एल्डर्स, जिसे जटी पंचायत भी कहते थे. जैसे गांव की पंचायत होती है उसमें एल्डर्स होते हैं, ऐसे ही जटी पंचायत थी जो अपने मेंबर्स को पे रूल्स एनफोर्स करते थे, रूल्स लगाते थे. पर जटी को अपने विलेज के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना होता था. एंड ज़्यादातर विलेजेस व गवर्न जो चलाया जाता था चीफ्टन्स चलाते थे. टुगेदर दे वो ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट का मतलब है साथ में देखा जाए तो वो एक छोटा सा ही यूनिट था ऑफ अ स्टेट. सो रीजन एंड एम्पायर. लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास चैप्टर 2, Tughlaqs chapter 3, or Mughals chapter 4 encompassed many regions. A Sanskrit prashasti. See chapter 2 for an example of a prashasti. Praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban 1266 to 1287 explained that he was the ruler of a vast empire
that stretched from Bengal, Gauda, to the east in Ghazni, in Afghanistan, in the west, and included all of South India, Dravida. People of different regions, Gauda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra, and Gujarat, apparently fled before his armies. So, on this page, it is given about the maps we can see, and also the different empires, the Cholas, Tughlaqs, Mughals, and Sanskrit Prashasti. We can also see that praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban, and in chapter 2 it is explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal to Ghazni in Afghanistan. So in the map we can see this is the Indian map of older times, and also we can see there are places named and numbered, and today also we can see that, as you can see, the 15th number, Bihar, is at a place, it still exists here, Bihar. So you can also see the map for the proper distinction of empires and regions. Historians regard these as exaggerated claims of conquests. At the same time, they tried to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. Historians आज भी इसको रिगार्ड करते हैं exaggerated claims of conquests की तरह, एंड वो समझने की कोशिश करते हैं क्यों रूलर्स वगैरह ने अपना क्लेम जमाने की कोशिश करी over different parts of the subcontinent of India. Language and region. In 1318, the poet Amir Khusrau noted that there was a different language in every region of this land: Sindhi, Lahori, Kashmiri, Dwarsamudri in southern Karnataka, Telangani in Andhra Pradesh, Gujri in Gujarat, Mabari in Tamil Nadu, Gauri in Bengal, Awadhi in eastern Uttar Pradesh, and Hindvi in the area around Delhi. Amir Khusrau went on to explain that in contrast to these languages, there was Sanskrit, which did not belong to any region. It was an old language and common people do not know it, only the Brahmanas do. About the language and region, जो पोएट थे आमिर खुसराव, उन्होंने 1318 में बताया कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस यूज़ करी जाती थी. सिंधी, कश्मीरी, लाहौरी, गौरी, अवधी, इन सब प्लेसेस के नाम एंड इनकी लैंग्वेजेस यहाँ दे रखी हैं. एंड ऑल्सो आमिर खुसराव ने बताया कि कैसे संस्कृत भी यूज़ करी जाती थी, बट संस्कृत कोई रीजन स्पेसिफिक नहीं थी. किसी ऐसा नहीं था किसी स्पेसिफिक रीजन में यूज़ होती हो, बट संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण्स को आती थी और लोगों को नहीं. ब्राह्मण्स बोला करते थे संस्कृत. सो बाय 700 many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. You will learn about these in chapter 9. They were also associated with specific ruling dynasties. There were considerable conflict between these states. 1700 तक बहुत सारे रीजन्स ने ऑलरेडी अपनी अलग अलग जियोग्राफिकल डायमेंशंस, मतलब अपना एरिया सेट कर लिया था, अपनी लैंग्वेजेस सेट कर ली थी, और अपना जो कल्चर था, जो वहाँ होता था, कल्चर फॉलो किया जाता था, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेट कर ली थी. इस बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे. और सो दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनास्टीज. अलग अलग रूलर्स के साथ ये एसोसिएटेड थे. There was considerable conflict between these states. Occasionally, dynasties like the Cholas, Khaljis, Tughlaqs, and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions.
Not all these empires were equally stable or successful. Compare, for example, Table 1 in chapters 3 and 4. What was the duration of rule of the Khalji and Mughal dynasties? So the Cholas, Khaljis, Tughlaqs and Mughals थे जो अपना एम्पायर बिल्ड कर पाए थे, बट सारे के सारे स्टेबल या सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे. इसके लिए एग्जाम्पल दिया है इन टेबल 1 इन चैप्टर्स 3 and 4. यू कैन कंपेयर द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ खलजी and Mughal dynasties. So when the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. जब 18th century में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, जब वहाँ के राजा महाराजा हटने लगे, तो फिर it led to the re-emergence of regional states. फिर से जो states थी वापस आने लगी, वापस बढ़ने लगी. ये चैप्टर 10 में दिया है. But years of imperial pan-regional rule had altered the character of the regions. But इतने सारे साल मुग़ल एम्पायर के अंडर में रहना, काम करना, उसके बाद जो इन रीजन्स, ये जो पैन रीजनल रूल के अंडर रहना, ये जो रीजन्स थे, इनके कैरेक्टर्स हैम्पर हुए, इनमें चेंजेस आ गए, पहले जैसे नहीं रहे. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. Subcontinent में जो regions थे, they were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. उनकी वही legacies थी जो उसमें रह गई थी, उनका कुछ individual अपना नहीं था. So this was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, elite cultures, and language. So this was apparent in emergence of many distinct and shared traditions. मतलब बहुत सारे अलग अलग distinct मतलब अलग अलग और shared traditions की emergency आने लगी. The management of economy को manage करना, और जो elite cultures थे and language, ये ज़रूरी था. Through the 1,000 years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation. 700 and 1750 के बीच में जो different regions का अपना individual character था, वो grow नहीं कर पाया isolation में. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctness. So इन regions ने impact feel किया कि larger pan-regional forces of integration उन पे force किया जा रहा है, लेकिन without ever quite losing their distinctiveness, अपने individuality. Old and new religions. The 1,000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious traditions. People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. 1,000 years of history जिनकी हम बात कर रहे हैं, अब हम लोग religion वाले changes जो थे उनकी बात करेंगे. So लोगों के belief usually personal भी, sometimes they were personal, but usually वो collective होते थे. Collective belief in a supernatural agency, religion, was often closely connected with the social and economic organization of local communities. As the social worlds of these groups altered, so too did their beliefs. So collectively लोग एक ही supernatural power में मानते थे. Religions जब बढ़ने लगे तो ऐसा ही होता था और closely connect कर पाते थे, और इसकी वजह से सिर्फ religious changes नहीं but social and economic organizations भी बनने लगी, local communities बनने लगी. It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. These included the worship of new deities,
the construction of temples by royalty and the growing importance of the Brahmanas, the priests as dominant groups in society. इस पीरियड में हिंदुइज्म में भी काफ़ी चेंज आया, जैसे कि आज हम जानते हैं हिंदुइज्म में ब्राह्मण्स जानते हैं, तो इन चेंजेस में वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, नए भगवान, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट होने लगे, रॉयल्टी जो रॉयल लोग थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए टेम्पल्स, और ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी, प्रीस्ट थे जो उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी और वो एक डोमिनेंट ग्रुप बन गए सोसाइटी में. Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmanas a lot of respect in society. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. Sanskrit, as told before, Brahmins को संस्कृत आती थी, तो इस वजह से उनकी जो पोजीशन थी वो और डोमिनेंट होने लगी और उनको सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट मिलने लगी. So, the word patron means an influential, wealthy individual who supports another person, an artist, a craftsperson, a learned man, or a noble. तो उन्हें patrons से भी support मिलने लगा. One of the major developments of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priests or elaborate rituals. You will be learning about this and other traditions in chapter 8. Other major developments में bhakti was also a major part. भक्ति का मतलब है एक पर्सनल डेटी को, भगवान को खुद से ही उनकी पूजा करना, और इसके लिए हमें ना कोई प्रीस्ट और ना ही किसी रिचुअल्स की ज़रूरत पड़ेगी. इस बारे में हम चैप्टर 8 में और डिटेल में पढ़ाई करेंगे. This was also the period when new religions appeared in the subcontinent. Merchants and migrants first brought the teachings of the Holy Quran to India in the 7th century. इस पीरियड में हिंदुइज्म के अलावा और भी रिलीजन्स हमें सब कॉन्टिनेंट में दिखाई देने लगे. जो माइग्रेंट्स थे, जो वहाँ से ट्रैवल करके आते थे वेस्टर्न साइड से, और मर्चेंट्स थे, वो अपने साथ होली कुरान लाए. कुरान पढ़ने वाली जो मुस्लिम्स की जो कुरान होती है, वो जो मुस्लिम्स की होली बुक है उसे कुरान कहते हैं. 7th century में Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of one God, Allah, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background. मुस्लिम्स की बुक कुरान उन्हें बताती है अल्लाह को एक्सेप्ट करना, अल्लाह उनका एक भगवान है और उनको ही वो सब लोग पूजते हैं, मानते हैं, और उनका सोशल बैकग्राउंड अल्लाह की वर्शिप पे नहीं डिपेंड करता है. Many rulers were patrons of Islam and the ulama, learned theologians and jurists. And like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers. बहुत सारे rulers थे patrons of Islam and ulama. Patrons मतलब wealthy, learned लोग थे, learned theologians and jurists. जूरी वाले मेंबर्स जो थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो सब थे इस्लाम, जो फॉलो करते थे इस्लाम और उलामा. और हिंदुइज्म की तरह ही इस्लाम में भी अलग अलग तरह से लोग थे जो अलग अलग वेज फॉलो करते थे और अलग अलग टाइप से इंटरप्रेट करा जा सकता है. There were the Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslims who accepted the authority of the early leaders, Khalifas of the community, and the succeeding Khalifas. तो दो तरह के मुस्लिम यहाँ बताए गए हैं, शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स. शिया मुस्लिम थे जो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ अली को ही अपना लीडर, मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर मानते हैं. एंड सुन्नी मुस्लिम्स वो जो खलीफास को अपनी कम्युनिटी का लीडर मानते हैं, और सक्सीडिंग खलीफास
जो खलीफाज हैं उन लोगों को ही मानते पूजते हैं. There were other important differences between the various schools of law, Hanafi and Shafi, mainly in India and in theology and mystic traditions. Schools of law में अलग और भी important differences थे, हनाफी and शफी जो इंडिया में पाए जाते थे. Thinking about time and historical periods. Historians do not see time just as a passing of hours, days, or years, as a clock or calendar. Time also reflects changes in social and economic organization, in the persistence and transformation of ideas and beliefs. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, periods that possess shared characteristics. तो जो हिस्टोरियंस हैं जो हिस्ट्री स्टडी करते हैं उनके लिए टाइम सिर्फ कुछ घंटे या कुछ दिन या कुछ साल नहीं है. उनके लिए ये कोई क्लॉक या कैलेंडर नहीं है, बट उनके लिए टाइम रिफ्लेक्ट करता है जो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में. तो इसलिए हमने पास्ट को लार्ज सेगमेंट्स या पीरियड्स में डिवाइड किया है टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड. In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into three periods: Hindu, Muslim, and British. This division was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical change and that there were no other significant developments in the economy, society, or culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे 19th सेंचुरी के मिडिल में उन लोगों ने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. ये पीरियड्स सोली बेस थे, मतलब इकलौते बस इसी फैक्टर पे बेस थे कि किन रूलर्स ने, किन रिलीजन के रूलर्स ने आज तक रूल किया है इंडिया पे, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में. इस हिसाब से ना कोई कल्चरल चेंज, ना कोई इकोनॉमिकल चेंज और ना कोई सोसाइटल चेंज इसमें कंसिडरेशन में लिया गया था. डाइवर्सिटी ऑफ द कॉन्टिनेंट was also ignored and not taken into consideration. Few historians follow this periodization today. Most look to economic and social factors to characterize the major elements of different moments of the past. The histories you read last year included a wide range of early societies, hunter-gatherers, early farmers, people living in towns and villages, and early empires and kingdoms. कुछ हिस्टोरियंस आज भी इस पीरियडाइजेशन को फॉलो करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स को देखते हैं, उसके बेसिस पे कैरेक्टराइज करते हैं अलग अलग मोमेंट्स पास्ट के. जो हिस्ट्री हमने पढ़ी थी पिछले साल 6th क्लास में, उसमें हंटर गैदरर्स, फार्मर्स और लोग जो टाउन्स और विलेजेस में रहते थे, जो अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स थे, हमने वो पढ़ा था. बट द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मिडीवल. You will find out more about the spread of peasant societies, the rise of regional and imperial state formations, sometimes at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religions, and the arrival of European trading companies. इस साल हम medieval history पढ़ेंगे, जिसमें we will find out more about peasant societies, जो रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट्स का राइज एंड फॉल हुआ, उनकी फॉर्मेशंस कैसे बनी, और समटाइम्स मतलब पेस्टोरल और फॉरेस्ट पीपल की कॉस्ट पे जो रीजन्स बने थे, हिंदुइज्म, इस्लाम कैसे मेजर रिलीजन्स बने, और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कैसे एंटर करी द सब कॉन्टिनेंट. These 1000 years of Indian history witnessed considerable change. After all, the 16th and 18th centuries were quite different from the 8th or 11th. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. Moreover, the medieval period is often contrasted
with the modern period. Modernity carries with it a sense of material progress and intellectual advancement. This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever. But of course, we know this was not the case. तो इन 1000 years में इंडियन हिस्ट्री ने काफ़ी कंसिडरेबल चेंज देखा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है. जैसे कि हम 16th और 18th सेंचुरीज़ को 8th और 11th से कंपेयर नहीं कर सकते. तो सब कुछ, सारी हिस्ट्री को एक ही पीरियड में डालना, कंसिडर करना अपनी खुद की प्रॉब्लम्स बढ़ाता. तो इसलिए हमने इसे ऐसे मिडीवल पीरियड का नाम दिया है. और इसके बाद मिडीवल पीरियड को यूजुअली मॉडर्न पीरियड से कंट्रास्ट किया जाता है. मॉडर्निटी का मतलब है मटेरियल प्रोग्रेस, मतलब जो एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजीज़, इंटेलेक्चुअल, जो स्मार्ट चीज़ें बनी और तरक्की करी इस जगह ने. बट द मिडीवल पीरियड, ऐसे तो मिडीवल पीरियड माना जाता है कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है. मॉडर्निटी का मतलब है चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल चेंजेस, एडवांसमेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिडीवल चेंजेस का मतलब ये नहीं है. मिडीवल पीरियड में भी काफ़ी अच्छे एडवांस चेंजेस हमने देखे हैं. During these 1000 years, the societies of the subcontinent were transformed often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. इन 1000 years में हम लोगों ने इतना ट्रांसफॉर्म किया है, इकोनॉमी इस लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी इतने ऊंची लेवल पे पहुंचाई है कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, जो यूरोप की कंपनीज थी, ट्रेड की ऊंची ऊंची अच्छी कंपनीज थी, वो लोग अट्रैक्ट हुए हैं इंडिया की तरफ, इस सब कॉन्टिनेंट की तरफ. एज यू रीड इन दिस बुक, लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंज and the historical processes at work. Also, whenever you can, compare what you read in this book with what you read last year. Look out for changes and continuities wherever you can, and look at the world around you to see what else has changed or remained the same. जैसे जैसे हम इस बुक में आगे पढ़ेंगे, तो जो चेंजेस हुए हैं उनको नोटिस करना, कि जैसे जो कुछ चेंजेस तब से अब तक चलते आ रहे हैं, कुछ चेंजेस तभी हुए थे, तभी रुक गए, अब और चेंज हो गया है, क्या सेम है, क्या सेम नहीं है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, एंड क्वेश्चन आंसर्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियोस. यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स and we'll discuss this. Thank you so much for watching.